Hi all, good morning and welcome to PTL Computer Institute. So as you know, I am Mukti, the faculty of PTL Computer Center. So today's agenda is we will discuss the booting process. So as you know, the booting process is the very crucial thing to start a system. So it's the first program which will going to start to make the use eligible for make the system eligible for the use. Okay. So we have listed out what are the steps part of booting process. First one is the power on, then after post. Once the post is done, then we will go for the BIOS. Then that from which device we will start our booting. I mean the OS which is installed in which item or device. That will the boot device selections. Once that is done, then we will load the OS and that need to activate it. Once that is done, booting process, booting device is selected, then we can go for the kernel load. Kernel is nothing but a program which is the core part of the operating system. Operating system ro kernel load hoଉଛି ଗୋଟେ program, the core part. ଯେମିତି ମଣିଷର ହାର୍ଟ ଡିସ୍କ ନଥିବ କ'ଣ ହବ? କାମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ଲୋକର। Likewise, kernel is the most important part of the operating system. Operating system କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। Okay. Then once operating system is done, then we can go for the drivers, loading the Haaland drivers. Once that is completed, we can go for the system initialization, means whatever the components available with the system, they are going to initialize with the computer. Okay. Once that is done, we can prompt the user to have the username and password, means user login screen. Okay, you will given what need to be the username and what will be the corresponding password that you need to provide. Once that is done, if the user login is success, then need to create the session initialization, means the user session will be created and assigned to that particular user. Means if some other users is again logging in, still there is this session will be there and the new session will be created for the new users or the upcoming users. Once the session is done, session creation completed, we can go for the reuse of the system. Means for which user the session is created, that user only going to use the system with the corresponding sessions. Clear? We'll describe one point one after another. Okay. So I think it's better to note down yourself instead of writing here. Okay. So let's start. Okay. Power on. Power on. First option. Power on, which is also known as initial hardware check. Which is also known as initial hardware check. Okay. Also known as initial hardware check. Lekha is it? Okay. When you press the power button, when you press the power button, on the computer, okay, on the computer, the system power off, UPN power off, and the power supply unit is also known as PSU, power supply unit. Okay, PSU, power supply unit, PSU begins to provide electricity to the motherboard, and the components like CPU, memory and storage device.
device, which is also known as secondary storage. Secondary storage. Secondary storage. Okay. Secondary storage. Meaning, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ power on କରୁଛି କ'ଣ ହବ first ମୋର ଯୋଉ power supply ହବ କୋଉଠିକି to the PSU power supply unit. Okay. PSU କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯତ୍ନ କରିବା ମଦରବୋର୍ଡ କ'ଣ PSU କ'ଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଅଦର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି କାଲି ଦେଖିବା ତାକୁ ଓକେ ତ ପାୱାର ତ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ କୋଉଠି ଯିଏ ଯିବ PSU ଗଲା PSU କ'ଣ କରିବ ଯେତେ ତମ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଛି ସେଠି ପଠେଇବ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୁହଁ ସେ କାହାକୁ ପଠେଇବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ମଦରବୋର୍ଡ motherboard is the device which is holding each and every component of the computer okay motherboard टा सबुत components जति तमर अछि समस्त होल्ड के करछि motherboard सेति कोइ ता कोन motherboard ता ना हला सेति पे काहे जो हमर अछि कोन माटी माटी पर ठिया होछि ना कोन कहू ना सो वसुधा ना माटी मा कोन अछि काहे आधार करछि का को हम समस्त से आधार करछि लाइकवाइज जो सिस्टम भीतर जो मदरबोर्ड अच्छे से कौन कर जिते कंपोनेंट सब अच्छे जेहेतु से समस्त होल्ड कर ना दिया कौन मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड कौन कर इट विल सेंड द पावर टू द कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ओके मेमोरी कहले पुणी स्टोरेज डिवाइस कहली मेमोरी माने तुम किए RAM एंड ROM ओके स्टोरेज डिवाइस माने सेकेंडरी स्टोरेज जिमि तुम हार्ड डिस्क है SSD है दिस आर द स्टोरेज डिवाइसेस ओके बुझियला पावर ऑन काम कोन नेक्स्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट okay once the electricity supplied to the components for the next step to start the post okay post stands for what power on self test look the computer begins the post process as part of this process this process its diagnosis diagnostic diagnosis each and every component each and every hardware components functionality okay next below are the some examples of hardware number 1 processor or CPU the CPU or the processor is initialized and starts executing the instructions okay next RAM memory or RAM RAM okay next the system checks
the RAM system checks the RAM and ensure system checks the RAM and ensure it's working as expected. It's working as expected. Okay. Then peripheral devices, PERIPHARAL, peripheral devices जा कौन कौन थी? Input output device. Okay, peripheral devices. ब्रैकेट लिख दियो, इनपुट आउटपुट डिवाइस. चलो नहीं थे गुणा करिए क्या कौन होगा. Okay, look, the computer checks all the connected peripheral devices, such as keyboard, mouse, okay, hard disk or SSD. What next? Monitor, etc, etc. Okay, keyboard, mouse, hard disk, SSD, monitor, etc. Okay, are working properly. Next, video output. Video output. The computer test. If the video display adapter, that is also known as graphics card. GRAPHICS, graphics card. Video display adapter or known as graphics card. Okay, graphics card is working and it sends a signal to the monitor, if everything goes well. Okay, so first one done, second one completed. Next, BIOS. What is full form BIOS? Basic input output system. Basic input output system. Okay, as part of BIOS, it will initialize all the connected peripherals or input output devices,
all the connected peripherals or input output device. Next, boot device selection. Next step is boot device selection. Okay. Next, as part of boot device selections, it will search for it will search for the boot order, to see to see SEE, to see where the operating system is stored, where the operating system, OPERATING, operating system is stored. Okay, operating system is stored. In general, the configuration order was, the configuration order is, number 1, hard disk or SSD. Next one is optical disk, যাক কোনটি CD or DVD, then the USBs, okay, like pen drive, external hard disks वगैरह. Okay, this is the order. If the OS is found in the hard disk, then it will load from that. If not, it will search for the optical disk. If not, then we go for the USBs. So it is a order. Okay, next. Once the booted device is selected, selection process completed. Let's say wherever the OS is available, I just selected that device. Then I am moving to the next process, that bootloader activation. Okay, bootloader activation. Once the BIOS selected the booting device, then it will load the bootloader program into the memory. Memory माने कोड़ा RAM को bootloader को से load करे वो. Bootloader is a small program which is responsible to load the operating system or OS.
operating system. If the operating system is Windows, if the operating system is Windows, the bootloader will call Windows Boot Manager. The bootloader will call Windows Boot Manager, which is also known as boot mgr. Okay, boot mgr, boot mgr. If it is a Linux or Unix kind of system, if it is a Linux or Unix, if it is a Linux, Linux, Linux or Unix family system, family operating system, Unix family operating system, it will load or it will call GRUB, group, Grand Unified Bootloader, Grand Unified Bootloader. Okay, group, Grand Unified Bootloader. এটা হচ্ছে কল করিব to load the Linux operating system or Unix family related operating systems. Okay, clear? Bootloader activation complete. Next. ओके যেতବେଳେ একু কল কলা তোমার কাট বুট ম্যানেজর বা গ্রুপ কো যেতବେଳେ কল কৰি দেলা সে কোন করিব তাক টাস্ক কোন নেক্সট লেখো the corresponding bootloader will search for the kernel, 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 search for the kernel को केसरा जैसे लिनक्स तो लिनक्स ताले कर्नल जो विंडोज एटाला कोन vm जो विंडोज हला जो लिनक्स एटाला कोन कर्नल जो विंडोज हला क्या खोजिबो vm vmlinuz 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 ओके एटाला कोन बरो कर्नल हला को केसरो जो तमरो अछि कोन लिनक्स अछि तो विंडोज अछि ताले vmlinuz एटा होचे कोन करियो लोकेट करियो के bootloader. Okay, once that is done, then next step is in case of Windows it will load, in case of your Linux kernel will load. एटा हम कोन लिख kernel loading, kernel or हम कोन कर परिबा vmlinuz loading. Okay, kernel तुम Linux केस रे एटा तुमरो Windows केस रे Windows कोन Linux कोन हम पढिया आगो हैलो टेंशन नै किछ. Next kernel loading. Kernel loading. Kernel loading. देखो after the bootloader loads the kernel, after the bootloader loads the kernel, kernel, the kernel begins work.
the kernel begins its work. Okay, next. The kernel is the core part of operating system. The kernel is the core part of operating system and is responsible for managing system resources like CPU, memory, and IO devices or peripheral devices. Responsible to manage CPU, memory, and IO devices. Clear? Okay. The next step is the kernel will load the drivers. The kernel, next one, the kernel will initialize all the all the hardwares all the hardware related drivers all the hardware related drivers all the hardware related drivers. Then drivers kona, like drivers is nothing but a program a program responsible to responsible to responsible to make hardware workable means hardware केतल वर्क करिवो ज तार ड्राइवर्स लोड हेतिवो बिना ड्राइवर्स रो हार्डवेयर किछ काम कर परिवो नै. ओके, makes hardware workable. Next कोन तमरो hardware abstraction layer by HL. HL stands for hardware abstraction layer. Hardware abstraction layer. Okay, next is 7. Hardware abstraction layer. Look, hardware abstraction layer by HL provides the standard interface to the operating system to communicate with hardwares It helps the OS work across different hardware platforms without needing specific drivers
specific drivers for each type of device, for each type of device. ओके माने कौन एचएल कौन करिवो सिंपली गोटे इंटरफेस प्रोवाइड करिवो का को ऑपरेटिंग सिस्टम को जा थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करे कम्युनिकेट करिवो का सहित विथ द हार्डवेयर सहित से कम्युनिकेट करिवो के एचएल थ्रू कम्युनिकेट होबो करिवो के ओएस नेक्स्ट द ओएस आल्सो लोड the OS also loads the various hardwares various drivers for the essential components like graphics card, network interface card, network interface card, and USB controllers. Next is system installation. बुझेला एचएल एंड ड्राइवर्स काम कोन बुझेला एचएल कोन हला स्टैंड फॉर तो कोन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर गोटे गोटे लेयर प्रोवाइड करिवो हार्डवेयर ऊपर बता कोया हम कोन इंटरफेस कोया जा थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम कोन करे कम्युनिकेट करिवो विथ द हार्डवेयर माने कोन तुम धर तुम घर मु डाकिया जेबी तुम फेस डायरेक्ट तुम डाक दी तुम होछ फास्ट मु फेस का करी घर जे गार्डियन अछंती बापा की मां जे भी थिवो ताके मु कहली कि मु एक्सवाइजेड लोक को मु डाक मुझे कथा हो चाहूँ जब से परमिशन देले ठीक अच्छे मुझे डाक दूसरी तापर से तुम डाकिले तापर मु तुम कम्युनिकेट कली लाइक वाइज इंटरफेस इज द वे थ्रू व्हिच विल कम्युनिकेट विथ द डिवाइसेस विथ द हार्डवेयर ओके इंटरफेस थ्रू हम कम्युनिकेट करिया का सहित हार्डवेयर सहित ताउ इंटरफेस कोन कोनती एचएल ओके हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर ता थ्रू हम कोन करिया कम्युनिकेट करिया विथ द हार्डवेयर बुझिला नेक्स्ट सिस्टम इंस्टॉलेशन हाँ आम कोड जो हार्डवेयर लोड कोड करते ड्राइवर्स एचएल लेवल करते या पर भी जो हार्डवेयर गुड़ा मो दरकार पड़ो स्टिल जमी तुम कौन है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है ओके नेक्स्ट तुम यूएसबी है सेगुड़ा ड्राइवर सब किए इनस्टॉल कर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम निजे इनस्टॉल कर तार जो जो हार्डवेयर दरकार ता करस्पोंडिंग से तार निजे इनस्टॉल कर किंतु सिस्टम रिलेटेड जोड़ा दरकार जमी तुम कीबोर्ड है माउस है मॉनिटर है ताको सब ऑलरेडी से इंस्टॉल करथो कि बूट लोडर सब इंस्टॉल करके तापर आस्ते कोठी कर्नल पाखु आस्ते बुझेला पार्ट ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम दे आर ऑलरेडी लोडेड टू योर सिस्टम ओके बट तापर जदी एक्स्ट्रा जिंस किछ दरकार जेमे ग्राफिक्स कार्ड न होले चलिबो विथ सिस्टम रो सेगुडा जो दरकार ताले हम कोन करबी यूज करबी काको एक हम यूज करबी बुझेला नेक्स्ट सिस्टम इंस्टॉलेशन ना system installation watch next is system initialization okay system installation look once the kernel is loaded and the HAL is set up the operating system will starts to load additional system service and processes like number 1 init process init process okay init process टा कहउथरो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ओके। और सेशन मैनेजर सब सिस्टम, और सेशन मैनेजर सब सिस्टम, SYSTEM सब सिस्टम जहाँ कौन कहती SMS ओके, SMS.exe एक उसे लोड करे वो, ओके। exe फॉर विंडोज, और एटा तला यूनिक्स पे, एटा तुमका पे विंडोज पे is the first program to start, is the fast process to start, fast process to start. This process is responsible, this process is responsible for launching, for launching service and processes, for launching services and processes. Next, system service, next one, system service. System service, it manages, it manages services like, manages services like network management, network management, security, security and user interface services, user interface services, user interface services begins their execution, begins their execution, okay, begins their execution. Done. Next is your user login. बुझीगला सिस्टम इनिशियल काम कौन, जिते मोर सब तक लोड हो गला ऑपरेटिंग सिस्टम, तापर कौन कर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेबो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेबो ता पई जो तुमर कर्नल जो तुमर हेज कोन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बा यूनिक्स फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम हेछि जदी ताल से का कॉल करेबो, इनिट प्रोसेस कॉल करेबो, ओके। जो तुमर विंडोज हेछि ताल का कॉल करेबो तुमर सेशन मैनेजर सब सिस्टम ता कॉल करेबो, कॉल कले कोन होबो से अलगा जो सर्विस सब अछि से मानकु से तारे कॉल करेबो, ओके। जमी तुम नेटवर्क मैनेजमेंट रहा, सिक्योरिटी है सब कॉल के करेबो तुमर ए जो स्टार्टिंग प्रोसेस गुडाक माने कॉल करे। इनिट माने द फर्स्ट प्रोग्राम टू यूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भीतर जो प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो सेला के इनिट प्रोग्राम। इन केस ऑफ तुमर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जदि अछि, जदि विंडोज अछि ताले एसएमएस वाला स्टार्ट हो, एसएमएस एक्स हैला, क्लियर। नेक्स्ट, यूजर लॉगिन, user login, user login. Left. Once the OS is loaded, once the user, once the Windows is, the OS is loaded with all the essential drivers and processes, with all the essential drivers and processes, the system presents, system presents with the login screen, login screen or GUI, और कौन कौन ताकू GUI, graphical, graphical user interface, okay, GUI, graphical user interface.
Okay, in case of your Windows, in case your Windows, it will prompt for username and password. In case your Windows, it will prompt for username and password. And for Linux, it may go for a terminal. It may go for a terminal and prompt for username and password. Prompt for username or password, depending upon the configurations. Depending upon the configuration. Okay, done. Next is user session installation. User session installation. Okay, look. User session initialization. User session installation. Look. Once the login is success, once the login is success, the user environment is initialized. The user environment is initialized. Okay, this includes this includes user preference and settings. Sorry, this includes loading user preferences and settings. Next, starting daemon thread, starting background task, like starting background process or daemons, starting background process or daemons, daemon DAEMON, daemon. Okay, such as network connection and antivirus services. Okay, next, presenting the user with desktop, taskbar and application window and application windows presenting the user with desktop, taskbar and application windows. माने कौन सेशन जब इनिशियलाइज हो बोर्ड यूजर पई से कोन करो यूजर रो जो कोन अछि और जो जिंस दरकार जेमि कोन हला यूजर एनवायरनमेंट से सेट करिवो यूजर एनवायरनमेंट सेट करिवो माने जो हम देखुतले गुटे डेस्कटॉप लोड होतला तो गोटे बार गोटे पड़ता ता कौन कह टास्क बार जहाँ ओपन कर तले सब देखा टास्क बार तापर कौन है तुम सेटिंग्स पर्सनलाइज सेटिंग्स माने कौन तुम वालपेपर रहा कौन तुम स्क्रीन सेवर रहा वगैरह वगैरह सेट करते सब पर्सनलाइज जाकि राइट क्लिक करके डेस्कटॉप रो पर्सनलाइज तो जाई सिलेक्ट करथुले सेटिंग्स वगैरह मन आछन नहीं ओके एटा करथुले सेडा सो सेट करबो आ कोन करबो इंटरनेट कनेक्ट करबो इंटरनली जो तुम कॉल करो कि जो डेमन थ्रेड जो कॉल होबो बा डेमन प्रोसेस जो स्टार्ट होबो से कौन करिवो तुमरो इनिशियली इंटरनल जाएंगे से कौन कर बैकग्राउंड रन हो से प्रोसेस जे कौन करो तुमरो एंटीवायरस एक्टिवेट करेबो आउ नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह करेबो ओके सेटा का काम तुम डेमन प्रोसेस रो काम जोटा कि बैकग्राउंड रो चलथो तुम जाना पड़िबो से स्टार्ट होउची बोली जे इंटरनल से काम करी तार सिस्टम को तुम रेडी करेबो फॉर द यूज ओके नेक्स्ट इज द लास्ट स्टेप सिस्टम रेडी फॉर यूज once system ready for use
once all the system process and user preference are loaded, once all the system process and user preferences are loaded, the computer is ready for normal use. Next, the user can begin running applications, accessing files, and and it, interacting with systems, interacting with the system. Okay, with this we are closing our booting process. Finally done, booting process complete. Okay, so thanks guys for watching our video, and let us know if you have any kind of doubt and concerns in a booting process. We'll happy to answer that. And thanks again for watching our channel.